हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोकस फ्रीक। दिस इज़ अभिषेक कुमार एंड इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वेल्स फार्गो का सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए इंटरव्यू प्रिपरेशंस कैसे करना चाहिए। तो गाइस, हमारे साथ है हिमेश मनियार फ्रॉम एनआईटी जयपुर। दिस समर ही गॉट पीपीओ ऑफर फ्रॉम वेल्स फार्गो एंड हिमेश को ये इंटरव्यू क्रैक करने में डेवलपमेंट ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। तो अगर आपका भी डी से क्वेश्चंस की वजह से कोई राउंड क्लियर नहीं हो पा रहा है, आप कंपनी से बार बार बाहर हो रहे हैं, तो हिमेश ने बहुत अच्छे से बताया कि कैसे उसने इन सारे इश्यूज को ओवरकम किया एंड कैसे उसको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ने हेल्प किया इंटरव्यूज को क्रैक करने में। सो हिमेश, प्लीज टेल अस अबाउट योर प्रोफेशनल जर्नी राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ योर कॉलेज। All right, Fox. So this is Himesh Manyar here, and I'm currently pursuing BTech in Computer Science and Engineering from MNIT Jaipur, and I'm currently a student of final year. So मैं Wells Fargo के साथ associated था as a summer intern from May 2023 till July 23, where I was assigned the task of converting a real-time projects architecture from monolithic architecture to cloud-native architecture by segregating services and then increasing the scalability due to the segregation of the services and deploying the individual services on a new web server. So basically मेरा starting मैं school से ही बताना चाहूँगा. So I was having computer science as a part of the curriculum in my school, but it was limited to coding in C++ with some basic concepts like loops, if-else statement, classes, and all of this. So when I came into the college, I came to know about various terminologies like development, competitive programming. So I started with web development using one and competitive programming using Python. I even got inclined towards machine learning and made several regression and classification models using deep learning. So at the end of the fourth semester, I was having, I could say, some decent level of projects and decent level of variety of projects on my resume. So you started learning from the first year of your college. Yeah, So what really motivated you to start learning from the first year of your college? it was basically the environment which was cultivated in MNIT that at the start of the project you will be assigned various clubs and you will be given responsibilities that you need to upskill these clubs. So I was a part of a club uh, Okay. with bosses even associated with. So I was polishing my web development skills over there, and then I got more inclination towards this development and machine learning stuff. करेक्ट, मुझे याद है हम लोग साथ में ही हमने डेवलपमेंट स्टार्ट किया था थिंक इंडिया में। कुछ माइनर प्रोजेक्ट्स पे भी Yeah. हमने साथ में वर्क किया था। डिड यू अप्लाई इन एनी अनदर कंपनी बिफोर दिस वन? So yeah, the majorly most of the companies fourth semester में आ रही थी. So at the end of the fourth semester, various companies like Shaw, Atlassian, Salesforce, Accenture, including Wells Fargo as well, also came into the college for internship. So they were having majorly the online coding test on HackerRank and 2 to 3 technical or HR rounds. But to my surprise, I was not able to clear the coding rounds of the starting companies like Disho, Atlassian, Salesforce, etc. So I did a thorough research on why I was not even able to crack the coding round, despite of having started with this coding skills and development skills from the first year itself. So after analyzing, I noticed that I was lacking the optimization trick and the alternate approaches for solving any coding question. ओके। So generally the questions are based on DP, greedy, and backtracking, and are generally of the level medium to hard level difficulty on lead code and geek for these. So based on the rejections that you had and the experience that you faced, what would you advise to your juniors for the preparation of internships? I would say that juniors should start working on doing DSC questions with little bit optimization trick and basically go for the questions which involves DP, greedy, and backtracking, as well as recursion to some extent, recursion with memoization in order to solve those problems. Do basically the medium to hard problems on lead code and lead for geeks. And yeah, I guess that would help you in clearing out the coding round of Wells Fargo.
हाँ, एक्चुअली ये चीज़ मैंने भी नोटिस किया था कि डीपी, रिकर्जन, मेमोराइज़ेशन इन चीज़ों पे कंपनीज़ का बहुत फोकस रहता है। You did your internship there and also got an PPO offer from them. So what are the positives of Yeah. Wells Fargo? So I would say there are the work culture of the Wells Fargo is very appreciable. They treat the freshers as their uh, colleagues, I would say. Okay. Even the fresher get ample opportunities to grow and opportunity to showcase their talents as well. There are Okay. good salary and perks for the freshers as well. And most importantly, it is ranked as number fourth top banks in US after JP Morgan and Bank of America. So you can say that Yeah, job that's security huge. is there. Okay, yeah. आजकल के टाइम में And there रिसेशन आ are रहा है तो जॉब even सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. yeah, correct. And there are even opportunities for corporate-based higher education, corporate-sponsored higher education, essentially. Okay, corporate sponsored. Okay, wow, that's Mm. really good. So, what was the stipend there? So it was 90,000 per month. The PPO conversion was 24 lakhs per annum, which was segregated into various components like 16 lakhs as base pay, 2 lakh as Okay, variable pay, 2 okay, lakh as joining bonus, okay. So that's a great pay as well. retention bonus as well. Yeah. So moving on to the rounds of Wells Fargo, देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस उन्होंने पूछे थे राउंड बाय राउंड. कितने राउंड्स थे टोटल? Total 4 rounds in. The Okay. first one was online test as usual. Then the second round was technical interview. Third round was senior manager interview, and the fourth round was HR interview. ओके, सो हिमेश, अगर एक नटशेल में हमें राउंड वन को देखना हो तो कैसा था राउंड वन? So round one was basically the coding round, and it was conducted on the MCAT platform. ओके. Which this round was having three sections: the verbal section, business aptitude section, and the coding section. And ओके. there was no negative marking as such. अच्छा. And there was one restriction that we could not switch between different sections. Like we cannot go from verbal section to coding question or from coding section to verbal section to ओके. answer all the questions of each section before proceeding on next section. So the verbal section was fairly easy as it was consisting questions on finding grammatical errors, like paragraph question, finding synonyms, antonyms, choosing correct phrases, etc. The business aptitude section was based on economics. Was there to test whether you are able to make logically correct decisions or not. ओके. And the last coding section was, I would say that it consisted of two coding questions. I was fortunate enough that I got two medium level coding questions on the topics of Aaron's trade. It's required a little bit of optimization, and I was able to do it with the help of CP with all test cases passed. And in total, 30 students cleared this round. ओके, दैट्स ग्रेट. सो जो कोडिंग क्वेश्चंस थे मैंने सुना वेल्स फार्गो में सबके अलग अलग आते हैं. Yeah. या ओके. So the questions could range from easy level of difficulty till to hard level of difficulty as rated on LeetCode. So ओके. even some of my friends got hard level of questions on this coding section as well. या So they were दैट. not able to clear this coding round as well, despite of having good knowledge on C. ओके, सो आई थिंक वेल्स फार्गो कंपनी है जो एप्टीट्यूड भी चेक कर रही है एंड वहाँ पे इंग्लिश ग्रामेटिक्स भी चेक कर रही है. Yeah, तो इसका मतलब yeah, कहीं ना कहीं वो इंटरव्यूज में कम्युनिकेशन पर भी काफी फोकस yeah. करेगी. ओके हिमेश, तो राउंड वन के बाद कितने दिन बाद रिजल्ट आया था? So मतलब जब मैंने राउंड वन दिया था, so the results were declared of the round one the night when I gave the test. So the same ओके. रात को आ गया था result, and the next day the interviews were scheduled. Uh, so I was given the slot of 9 to 9:50. So ओके. the duration of this round was 50 minutes only. सो हिमेश, राउंड वन के बाद कैसा था, कितना टाइम मिला था एंड राउंड टू के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? So round one हमारा रात को रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था एंड द नेक्स्ट डे द इंटरव्यू राउंड्स वर शेड्यूल्ड. ओके. स्ट्रेटजी बस यही है कि जो तुम हो वही प्रेजेंट करो इंटरव्यू के सामने. डोंट फेक योरसेल्फ.
in front of the interview. क्योंकि एक दिन में क्या ही कर लोगे तुम. So करेक्ट. this round consisted of this round duration was 50 minutes, and in this round the interviewer asked me to introduce myself. We had a brief discussion on the projects. Even asked me about my hobbies, my interests, and my reasoning capabilities. Since I was having more projects on my resume, the interviewers was keen in knowing my projects and mainly on my machine learning projects. अदर स्टूडेंट्स के लिए शायद वो डीएसए टाइप का राउंड था, बट सिंस आई वाज हैविंग प्रोजेक्ट्स ऑन माय रेज्यूमे, सो द मेजर डिस्कशन वाज इंपॉर्टेंट अराउंड माय प्रोजेक्ट्स. So since he was asking me about my machine learning projects and the various terminologies, I was able to answer them because I was having hands-on experience on machine learning with Python. I was able to answer them. And in the end, he even asked me if I was having any questions. So my overall experience in this round was very good. I could feel that I was able to convince the interviewer, and the interviewer was even very humble and friendly. In Wells Fargo, there is one, मतलब एक Wells Fargo ये चीज रखती है कि you do not call your manager by sir, you call them with their name. Okay, yeah, that's actually what I was told at Amazon as well. Like a manager told me, like, there is no sir here. I don't know who you are No calling sir. to. Yeah, Exactly. Okay. around 20 students cleared this round. ओके, तो इसका मतलब तुम कह सकते हो कि जिनके पास डेवलपमेंट एक्सपीरियंस था, उन्हें उनके प्रोजेक्ट्स के ऊपर ज़्यादा प्रॉपर ओनरशिप की Yeah, ज़रूरत थी। एंड yeah. यहाँ पे हम ये And कह those who सकते were हैं. having basic projects on resume, they were asked question on DSA and ओके, CP, I guess. तो यहाँ पे कह सकते हैं ना कि जिसका डीएसए अगर थोड़ा-सा वीक हो, वो प्रोजेक्ट्स को अपने अच्छे बना के यहाँ पे आगे बढ़ सकता है। Yeah, but वही बात है कि projects, you need to know about your projects very well before the start of the interview. If तुम्हें project के बारे में पता ही नहीं है, then you would fumble yourself up in the interview. So वही चीज है, तो वो चीज मत करना interview. करेक्ट, आई थिंक Don't इंटरव्यूअर को fake your आइडिया लग project. जाता है। इंटरव्यूअर को आइडिया लग जाता है कि जो भी इंटरव्यू में हमें एक्सप्लेन कर रहा है प्रोजेक्ट के बारे में, वो सही Hmm. है, खुद से बनाया है कि नहीं, इतना आइडिया लग जाता है सबको। Hmm. ठीक है, तो राउंड 2 में उन्होंने ज़्यादातर ध्यान दिया कि तुम्हारे प्रोजेक्ट के ऊपर क्वेश्चंस पूछे, और बेसिकली जिन्होंने प्रोजेक्ट्स पे वर्क नहीं किया था, उनके लिए उन्होंने डीएसए पर क्वेश्चंस पूछे। तो राउंड 3 में उनका फोकस कहाँ पर था, एंड राउंड 3 का इंटरव्यू का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था उनका? Round three, मतलब, it started after 2 hours from round one, and ओके, this round was scheduled with the senior manager of Wells Fargo, और उसका duration भी 50 minutes का था. So in this round, the interviewer was already knowing that I was having hands-on experience with machine learning because of my previous interview. So ओके, this round also majorly revolved around resume discussion and HR type of questions. We I could say that we had a very long discussion on projects where the interviewer was keenly interested in how I approach different methodologies to implement a particular problem statement. Like development में problem statement तुमको दिया रहता है, तो उसको तुम किस ways में तुम approach कर सकते हो वगैरह. So ओके, he or she even gave me insights of the work culture at Wells Fargo, the tech stacks they use, and the plans of incorporating upcoming domains like machine learning and blockchain in Wells Fargo in their existing projects. So then she asked me about my hobbies, ओके, what I like to do in my free time apart from development and coding. So it was basically this coding type हम्म, plus resume discussion plus HR type of questions. ओके, And then she even finally asked me that how would you contribute your ML skills to Wells Fargo? To which I answered that being a banking company, I would like to help Wells Fargo avoid credit card frauds through developing a machine learning model, which yes is is fair enough to use in such banking companies to avoid such frauds. At last, he even asked me if I was having any questions related to Wells Fargo, and yeah, around 15 students cleared this round. तुमने डेवलपमेंट भी किया है, एमएल भी किया है,
तो इस Yeah. इंटरव्यू के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल क्या रहा? एमएल का प्रोजेक्ट या फिर वेब डेवलपमेंट्स के प्रोजेक्ट? तो बेसिकली मैं ये स्टेट करना चाहता हूँ कि तुम स्टार्टिंग में तो डेवलपमेंट वेब डेवलपमेंट वगैरह स्टार्ट करो। क्योंकि तुम्हें इंसाइट्स मिलेगी कि डेवलपमेंट में तुम किस टाइप से अप्रोच कर सकते हो पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट को। अगर तुम्हें वेब डेवलपमेंट थोड़ा बहुत करने के बाद पता चले कि दिस इज नॉट माय पीस ऑफ केक, देन यू कैन ट्राई एक्सप्लोरिंग मशीन लर्निंग। सो मैंने जनरली वेब डेवलपमेंट विद मशीन लर्निंग किया था, तो यूजिंग पाइथन एंड फ्लास्क, that gave me an edge over students who did pure web development and pure machine learning, because I integrated both the domains. So customer deliverable तुम्हें बनाना है अपने प्रोजेक्ट को, so keep in mind that also. ओके, सो एक्चुअली किसी एक पर प्रोजेक्ट करने से ज़्यादा बेनिफिशियल हुआ दोनों को कंबाइन करके एक प्रोजेक्ट को पोर्ट्रे करने में। Yeah. ओके, दैट वाज़ गुड। I should say that web development ना कि तुम restrict रहो front end से ना ही back end से. You should try going for full stack development, because eventually तुम्हें एक प्रोजेक्ट ऐसा फुल स्टैक का चाहिए रेज्यूमे में पुट ऑन करने के लिए, ताकि इंटरव्यू को लगे कि हाँ इसने कुछ ऐसा डिसेंट लेवल ऑफ प्रोजेक्ट कर रखा है कि इसको सारे स्टैक्स के बारे में पता है, कि मुझे अगर इसको फ्रंट एंड की टीम में डालना है तो फ्रंट एंड में डाल सकता हूँ, बैक एंड की टीम में डालना है बैक एंड की टीम में। जनरली कंपनीज प्रीफर करती है कि फुल स्टैक डेवलपर्स को हायर करें। करेक्ट, क्योंकि फुल स्टैक डेवलपर उनके लिए रेडी टू वर्क हो गया। उन्हें फ्रंट एंड में या डाल दो, वहाँ वो चला जाएगा, बैक एंड में डाल दो। नहीं तो जो सिर्फ डीएसए पे फोकस करते हैं, उनके साथ दिक्कत होती है कि उनको इनिशियली सब सिखाना पड़ता है एंड 2 मंथ के या इंटर्नशिप में तुरंत सिखाना, तुरंत उनसे या प्रोजेक्ट कराना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। ठीक है, तो राउंड 3 जो था उनमें मेन फोकस था उनका सीवी प्रोजेक्ट्स के ऊपर। उन्होंने अपने कल्चर के बारे में तुम्हें बताया। ओके, एंड देन दे मूव टू राउंड 4। सो हाउ वाज़ राउंड 4 एंड वहाँ पे उनका क्या फोकस था? राउंड फोर तो बेसिकली एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन था विद एचआर। तो वो तो सिर्फ 2 मिनट का टेलीफोनिक कन्वर्सेशन था। सो इट वाज बेसिकली अबाउट द स्टाइपेंड विच द वेल्स फार्गो is offering, the job location, the various job locations they are offering, ओके। Bengaluru, Hyderabad, and Chennai, and asked us about our overall experience with the previous roles. So it's kind of they already selected you. I mean, you would have some kind of intuition like I have selected. Yeah, but out of those 15 students who cleared the round Okay. three, only 8 were given the opportunity to enter with us. So they dropped 7 students from this HR round as well. Okay. So after interviewing in this HR round, they dropped 7 students. Okay. This was not an interview, but I should say that HR round basically तुम्हें ये सब चीजें बता देगा, बट वेल्स फार्गो को था कि 15 स्टूडेंट्स को एटलीस्ट सिलेक्ट, मतलब हमारा कैपेबिलिटी 8 स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है। Hmm. सिंस वी आर गेटिंग 15 स्टूडेंट्स ओनली, वी वुड कंसीडर द टॉप 8। Okay. कुछ क्राइटेरिया के हिसाब से हम लोग टॉप 8 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करते हैं। So अगर हम एक नटशेल में वेल्स फार्गो की पूरे इंटर्नशिप ड्राइव को समझना हो, उससे कुछ कंक्लूजन निकालना हो, तो क्या निकलेगा? बस यही है कि do the projects on your own. Don't fake yourself in front of the interview. Give honest answers, because eventually उनको पता चल जाएगा कि तुम फेक कर रहे हो वगैरह। और दूसरी बात कि if you are having any DSA question in the first round, try to ask the interviewer कि इसका अप्रोच मैं इस तरह से लगा रहा हूँ, will it work, और वेरियस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह उनको पता लगना चाहिए कि तुम ये कोडिंग क्वेश्चन को बाय द मीन्स ऑफ माइंड कर रहे हो, ना कि बाय द मीन्स ऑफ आर्ट के तुम रट के नहीं हो, Okay. तुम अप्रोचेस लगा रहे हो। और वही बात है कि तुम इन्वॉल्व हो इस कोडिंग क्वेश्चन के लिए। और बेसिकली हमें दूसरी बात इंटरव्यूअर कि के साथ इन्वॉल्व होके काम करना है, उसको भी या पार्टिसिपेटेड फील कराना है या क्वेश्चन सॉल्व या करते समय। 3 राउंड्स के बाद जब तुम्हारा सिलेक्शन का मेल आया, तब तुम्हारा रिएक्शन क्या था? सो मतलब आप समझ ही सकते हो, 4-5 कंपनीज के रिजेक्शंस के बाद एक कंपनी तुम्हें इंटर्नशिप ऑफर करने वाली हो, और वो मतलब इसके पर्क्स भी इतने अच्छे हो, तो ऑफ कोर्स आई वुड बी इन क्लाउड नाइन। सो was very happy with my selection, and I even burst into tears of joyness. ओह वाओ! दैट्स आई मीन जब इतना हार्ड वर्क किया हो एंड हमें कोई फाइनली एप्रिशिएट करे, सो Hmm. दैट्स रियली नाइस।
सो Yeah. आई थिंक यू वेल डिजर्व्ड इट। एक्चुअली हमने साथ में वर्क किया तो मैंने देखा है तुम्हारा काम बहुत अच्छा होता है। यू नो व्हाट आई लाइक अबाउट यू कि यू नेवर गिव अप। इफ आई गिव सम टास्क टू यू जस्ट फिगर आउट सम वे टू Hmm. डू दिस। इट्स नॉट लाइक आई कैन नॉट डू दिस। यू Hmm. ऑलवेज फिगर आउट समथिंग। जिद चढ़ी होती है बॉस. सो हिमेश एक्चुअली कई सारे लोग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं कोड फोर्सेस पे जब डीएसए का फेज चल रहा होता है तो एक क्रेज चलता है ना सबके मन में कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम में हमें रेटिंग्स लानी है हर वीकेंड पे एक कॉन्टेस्ट देना है सो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग डिड इट रियली हेल्प यू ड्यूरिंग योर इंटरव्यूज एंड योर डीएसए एग्जामिनेशंस? कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एज सच तो मतलब उस लेवल का तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग तो कोडिंग ओके। क्वेश्चन में था नहीं मेरे. So, but a little bit of competitive programming like optimization and finding greedy approach to these questions which are given in the coding test helped me out in uh, clearing the coding honors. But I would say कि मतलब इतना तो वो अच्छा। स्पेशलिस्ट वाले बंदों को नहीं आया. ओके। हम्म। मिनिमम लेवल ऑफ कोडिंग आनी चाहिए with medium to hard level difficulty of lead code. ठीक Medium है तो generally. मेनली क्वेश्चंस का प्रैक्टिस होना चाहिए ताकि वहां पे हम खुद से ऑप्टिमाइजेशन कर सके डिफरेंट वे में सॉल्यूशन को पोर्ट्रे कर सके एंड Hmm. कहीं न कहीं प्रैक्टिस जो करते हैं हमको नंबर Yeah. क्वेश्चंस का उसका बेनिफिट हाँ. दिखता है वहाँ पे। व्हाट वुड बी योर सजेशंस टू द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स दैट हैव जस्ट जॉइन्ड आवर कॉलेज? I would firstly advise the first year students to get relaxed themselves because I know what it feels like after cracking the board exam and most likely in other students they crack the JEE exam. JEE means an advance. So get yourself relaxed up, explore various domains and get yourself socially active by participating in various clubs and at least start preparing the basic data structures from arrays, string, trees. Don't go till graph. Uh, you can start with DP and backtracking as well. But first year में trees तक तो ठीक है मतलब इतना चल जाएगा. Don't waste your time on focusing which programming language to choose. Please, you get started with any of the programming language. I would say generally companies prefer करती है तुम कोडिंग करो या तो सी प्लस प्लस में पाइथन में सी में जावा स्क्रिप्ट में स्केला में रूबी में इतनी अपॉर्चुनिटीज है का तो सी प्लस प्लस जावा के पीछे खड़े हुए. बट ऑन द सेफर साइड आई वुड एडवाइज कि तुम सी प्लस प्लस से स्टार्ट हो क्योंकि उसके पास एसटीएल लाइब्रेरीज है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की सो सपोर्ट. आई एग्री विथ यू कि फर्स्ट ईयर में इतना कुछ क्रैक किया है तो थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए आसपास में समझने का कैसा एनवायरनमेंट है, सीनियर्स हमें क्या एडवाइस कर रहे हैं, कॉलेज में चीज़ें कैसे होती है एंड देन धीरे-धीरे जब सिंक करने लगे कॉलेज लाइफ, देन हमें स्टार्ट करना चाहिए प्रिपरेशन के लिए कि हमें किस वे में जाना है एंड अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करना चाहिए। एंड हाँ, ये जो स्टार्ट में होता है ना लैंग्वेज का कि हमें कौन सी लैंग्वेज करनी है, इसमें टाइम तो इसमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। जस्ट पिक अ लैंग्वेज एंड गेट स्टार्टेड। No, really, I've seen students that they wasted first year just by thinking that which language they should start with. They are not focusing on to that how should we approach the problem. They are wasting time on which language should I start. अरे भाई syntax construct सब कुछ सेम ही होता है. करेक्ट। माइनर माइनर चीजें से एक दिन में तुम स्विच कर लोगे. और क्या? तुम्हारा लैंग्वेज कौन सा था बाय द वे? I was coding in Python, but I would advise कि go with नाइस। C++. कि वही बात है कि कुछ कंपनीज अलाउ नहीं करती Python वगैरह में. C++ सेफ रहेगा. तो सो टू बी ऑन सेफ साइड हमें सी प्लस प्लस पिक करना चाहिए। एक्चुअली पता है ये सजेशन मैंने दिया था मेरे लास्ट जो वीडियो बनाया था ना एसडी हम्म. रोड मैप के ऊपर कि अगर ज्यादा डाउट है जब सी प्लस प्लस फिर आगे बढ़ो। सो आफ्टर डूइंग दिस वंडरफुल समर इंटर्नशिप एट वेल्स फार्गो व्हाट वाज योर ओवरऑल एक्सपीरियंस विद द वेल्स फार्गो? आई मीन अबाउट दिस वर्क कल्चर, द प्रेशर यू आर हैविंग देयर। Uh, So I was intern with Wells Fargo in Hyderabad, and believe me, it was one of the best experience I could get. With the professionalism in the work culture, the friendly nature of the lead managers, senior developers, etc., the smooth process of the onboarding, the environment wherein we worked, the insights of the tech stacks they work on, which was way advanced than what we work on. We do not do testing, we do not do CI/CD pipelines. या करेक्ट। The importance of the problem statement is not given to our team. Like everything was like a dream come true for me. And we even got the opportunity to showcase our project with US developers and we got appreciation from them as well. And Hyderabad is a city of
full of life and adventurous experience. So, I mean, it's good to hear that you had great experience in your internship. So, best luck for your final year at college. Thank you for this interview. Thank you again so much, boss, for inviting me for. सो गाइज ये वीडियो था हमारा वेल्स फार्गो के इंटर्नशिप प्रिपरेशन को लेके। अगर आपके मन में कोई पर्टिकुलर कंपनी आ रही है जो आपके कैंपस पे आने वाली है, देन कमेंट डाउन, आई विल श्योरली मेक अ वीडियो ऑन दैट कंपनी एज वेल। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल टू कीप वॉचिंग दिस अमेजिंग वीडियोज, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट दैट लाइक बटन।